Dear student, we are going to study the next and new chapter, indices and cube root. In this chapter, we study the index form of the number. The product of 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Product of 2 is written in 5 times. Can be expressed as 2 raised to power 5. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times can be expressed as 2 raised to power 5, in which 2 is called base. 2 को base बोलते हैं and 5 is the index. 5 को index बोलते हैं. Now laws of indices. If m and n are integers, then the laws of indices are number 1, a raised to power m into a raised to power n, यानी बेस सेम, दोनों का बेस सेम है और इनटू साइन है, तो क्या होता है a इज इक्वल टू a raised to power m plus n. a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. यहाँ पे बेस सेम है और इंटू का अगर साइन है तो इंडेक्स का एडिशन होता है. तो सेकंड रूल, a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बेस सेम है और डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पे होता है माइनस a raised to power m माइनस n. नाउ थर्ड रूल, a इंटू बी, और ये ब्रैकेट का इंडेक्स है m, दैट इज इक्वल टू ये पावर a को भी जाता है और ये पावर b को भी जाता है, मीन्स दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n, b रेज टू पावर m. नाउ फोर्थ रूल, any integer raised to power 0, then its value is 1. Now fourth rule, a raised to power minus 1 यानी निगेटिव m है, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन a raised to power प्लस m. नाउ सिक्स्थ रूल है a raised to power m raised to the power n, then we get a raised to power m into n, index का multiplication. Now seventh rule है a upon b raised to the power m, तो ये पावर a को भी जाता है, a पावर b को भी जाता है, means that is equal to a raised to power m upon b raised to power m. Now last rule है a upon b raised to the power minus m. इसको अगर पॉजिटिव बनाना है माइनस m को, तो इसका रेसिप्रोकल लिखो b अपॉन a रेज टू द पावर प्लस m. नाउ यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, राइट प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज 3 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 2. यहाँ पे बेस सेम है और इंटू का साइन है, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 यानी 3 रेज टू पावर 5 प्लस 2 यानी 7. नाउ सेकंड, 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 9, बेस सेम है और यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पे होगा 7 माइनस 9, मीन्स 3 रेज टू पावर 7 माइनस 9 यानी माइनस 2. नाउ थर्ड रूल है 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू पावर 5, यानी यहाँ पे पावर का प्रोडक्ट होगा, यानी 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5, दैट इज 4 इंटू 5 20, मीन्स 3 रेज टू पावर 20. नाउ फोर्थ 5 रेज टू पावर माइनस 3, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन 5 रेज टू पावर प्लस 3. नाउ नेक्स्ट, एनी नंबर रेज टू पावर 0, देन इट्स वैल्यू विल बी 1, means 5 raised to power 0 is equal to 1. Now any number raised to power 1 means its value will be itself, means 5. Now
7, 5 इंटू 7 रेज टू पावर 2, तो ये पावर 5 को भी जाता है और ये पावर 7 को भी जाता है, मीन्स 5 रेज टू पावर 2 इंटू 7 raised to power 2. Now add 5 upon 7 raised to the power 3, and then 5 raised to power 3 or 7 raised to power 3. Now last 5 upon 7 raised to the power minus 3. इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, यानी 7 upon 5 raised to the power प्लस 3. यहाँ पे 7, यहाँ पे 5. Now meaning of numbers when the index is a rational number of the form 1 upon n. Now to show square of a number, the index is 2. Means suppose we have to write the square of a, means a square. And to show the square root of a number, the index is 1 by 2. In general, the square of a can be written as a raised to power 2, and square root of a is written as a raised to power 1 by 2 or root a. Now similarly, cube of a can be written as a raised to power 3, and cube root of a can be written as cube root of a, in this way. Now in general, the nth root of a is written as a raised to power 1 upon n. Now practice set 3.1. Express the following number in index form. First example is 5th root of 13. Now how to write 5th root of 13? 13 raised to the power 1 by 5 means 5th root of 13. Now second example है square root of 256 means 256 raised to the power 1 by 2. Square root means power 1 by 2, or we can write it also square root of 256. Now cube root of 17. Cube root of 17 means 17 raised to the power 1 by 3. In this way, we can express the following numbers in index form. Remaining example of example 1, we have to solve in your book. Now question 2, write in the form nth root of a in each of the following example. Now in this example, first 81 raised to the power 1 by 4. अभी इसके उल्टा लिखना है, ऐसा दिया है तो ऐसा आंसर लिखना है. 81 raised to the power 1 by 4 means 4th root of 81. 4th root of 81. Now second example, 512 raised to the power 1 upon 9 means 9th root of 512. Now 41 raised to the power 1 by 2, इसका रहेगा square root of 49.